Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student and welcome in college physics. So student आज हम डिस्कस करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दैट इज एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन। आज हम इस रिलेशन को डिराइव करेंगे, फिर इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे एंड देन यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ दिस एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन। सो आइए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन सिंपली डिफाइन एज द अनसर्टेनिटी इन एनर्जी टाइम्स मीन्स मल्टीप्लिकेशन द अनसर्टेनिटी एंड टाइम डिल टी is greater or equal to h cut. This is the mathematical form of energy time uncertainty, and now we derive this relation. The position and momentum uncertainty gave us another uncertainty relation that is in this form. अगर हम पोजीशन और मोमेंटम के अनसर्टेनिटी को प्रिंसिपल की यूज़ करें, that is del x multiplied by del px greater or equal to h cut. So by using that uncertainty relation, we can easily derive this energy time uncertainty relation. Let's consider a free particle of mass m moving with momentum p and total energy E. Free particle means that particle which is not under the action of external force, or simple free particle that particle with potential energy equal to 0. If we have a mass m which is moving with momentum p, then its total energy E equal to kinetic energy plus potential energy, but kinetic energy equal to momentum square by 2m plus 0 because the particle is free, so potential energy is 0. If del P is the uncertainty in momentum, then uncertainty in energy will be what? Let's consider uncertainty in particle is del P, then energy uncertainty del E will be what? Simple, अगर हम इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करें, so this become del E, this become 2p by 2m into del P. So 2 cancel. So uncertainty in energy equal to p over m into del P, but the ratio of momentum and mass is known as velocity. So del E equal to v into del P. Next, where v is the velocity of particle, as the quantum particle have a group of wave which is known as wave packet. So the velocity of group of wave is v and the position uncertainty of particle is del x. We know that हमारे पास जब भी कोई भी एक क्वांटम पार्टिकल हो और वो मूव करता हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, then there will be a group of wave associated to that particle, and the position uncertainty of this particle in this region is what? Del x. Now if this group of wave pass through this point in time del t, then the time required by wave group to pass through a point p, then the time equal to del x over v by using a well-known relation s is equal to vt, where t equal to s over v and s is here is the uncertainty in position of the particle in this wave group. This relation can be written as velocity of the particle या velocity of group of wave equal to del x by del t. So equation 1 becomes, this is our equation number 1. So by putting this relation in equation 1, we obtain del E equal to p over m into del p equal to v del p. This is our relation number first. And velocity from the previous slide is del x by del t. So putting here v equal to del x by del t. So del E equal to del x by del t, substituting the value of v and del p as it is. So by cross multiplication, del E multiplied by del t equal to del x into del p. But we know that from the position and momentum uncertainty that del x del p greater or equal to h cut. So this relation can be written as, here we put the value of del x del p which is greater or equal to h cut, this one. So this is known as
energy time uncertainty relation which was presented by Heisenberg. Now the physical significance of this relation. First one, the ground state of an atom has infinite lifetime. So its energy in ground state sharply defined means with almost zero uncertainty. मिसाल के तौर पर हमारे पास हाइड्रोजन न्यूक्लियस है और ये हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है और इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में है या नेचुरल स्टेट में है। तो याद है कि ग्राउंड स्टेट में किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो लाइफ टाइम होता है वो इन्फिनिटी होता है, करेक्ट। सो व्हाट विल बी द एनर्जी अनसर्टेनिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इन दिस ग्राउंड स्टेट? सो वी नो दैट del t tends to 0 or del E equal to h cut divided by infinity. So del E approach to 0 means the first state or the ground state of hydrogen atom is sharply defined, means there is almost zero uncertainty and energy of the electron because the electron lifetime is infinity. Now next, point 2. This is the energy time uncertainty relation. So point 2, as the excited state have almost 10 power minus 8 second, so its energy is uncertain because the del t is 10 power minus 8 not equal to infinity. So energy uncertainty is non-zero, that is del E is not equal to 0. Per ground state del E equal to 0, but per excited state del E is not equal to 0. It means energy not sharp defined, but there is some uncertainty in energy as well as frequency. It simply means when an electron de-excited, it not emit a unique energy photon, but there will be a band of energy or frequency because the excited state energy not sharp defined. इस सारे पैराग्राफ का मतलब ये है, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट है और ये हमारे पास जो है एक्साइटेड स्टेट है, ये वाला सेकंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब इस स्टेट में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में या सेकंड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कितने टाइम के लिए स्टे करता है? ऑलमोस्ट 10 पावर माइनस 8 सेकंड। सो अनसर्टेनिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट विल बी व्हाट? डेल ई इज इक्वल टू एच कट डिवाइड बाय डेल टी। सो प्लांक कांस्टेंट को अगर हम टाइम इससे डिवाइड करें सो वी ऑब्टेन डेल ई नॉट इक्वल टू 0। सो इसका मतलब ये है कि इस स्टेट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो शार्पली डिफाइन नहीं है, बल्कि वो एनर्जी हमारे पास जो है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हमारे पास शार्प डिफाइन है, मीन यूनिक था। लेकिन इस स्टेट की एनर्जी हमारे पास क्या है? वो एक बैंड पर मुश्तमिल है, मीन इसकी एनर्जी में अनसर्टेनिटी है। द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन सेकंड स्टेट इज नॉट ए यूनिक एनर्जी बट इट हैविंग a band of energy due to what? Due to this non-zero uncertainty terms. Now to get a more clear picture about the uncertainty of energy and time, let's consider this example. To get an idea of the numerical values, the lifetime of an atomic state is of the order 10 power minus 18 second. हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने टाइम के लिए एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं? 10 power minus 8 सेकंड। Thus the energy of uncertainty in this excited state is del E equal to h cut divided by time. By putting the value of h cut and time, we obtain this one. So this is the energy uncertainty of the electron in the excited state. And the width of the spectral line when the atom de-excite to the ground state will be what? और याद रखिए हमारे पास ओपो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या होगी? बाय यूजिंग E इक्वल टू एच ए प्लांक्स रिलेशन डेल न्यू इक्वल टू दिस वंस। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास E एक्साइटेड स्टेट है और इस एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जंप करता है, तो याद रखिए इसकी जो एनर्जी है, जो प्रोटॉन यहाँ से एमिट होता है, उस प्रोटॉन की एनर्जी में हमारे पास इतनी अनसर्टेनिटी होगी और जो प्रोटॉन एमिट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी में हमारे पास अनसर्टेनिटी इतनी होगी, क्योंकि हम वी नो दैट इन दिस एक्साइटेड स्टेट द अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी दिस वन एंड एनर्जी इज दिस वन। और इट मीन्स अगर इसको हम इनवर्स में करें, मीन्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाए, तो फिर हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, इट मीन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन नीड टू जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट रिक्वायर्ड
10 power 14 hertz photon, then it means there is an uncertainty in frequency that is equal to this one, this equal to this one. If this add or subtract to 10 power 14 hertz photon, then still electron will be excited to a excited state. एक्साइटेड स्टेट मीन्स अगर हम इन्वर्स में जाए, सपोज हमारे पास ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है, और इस ग्राउंड स्टेट से हमें इंटरेस्टेड है कि इलेक्ट्रॉन को एक ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाए। अगर इसके लिए हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटॉन है, अगर इस पर हम एक फोटॉन को इंसिडेंट करें और उसके लिए फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है 10 पावर 14 हर्ट्ज, तो याद रखिए ये एक्साइटेड स्टेट जो है इसमें अनसर्टेनिटी है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस स्टेट से इस स्टेट तक जाने में ये वाला फोटॉन भी काम करेगा कि इलेक्ट्रॉन को इस स्टेट से इस स्टेट तक ले जाए। लेकिन अगर हमारे पास ये वाला फोटॉन फ्रिक्वेंसी वाला फोटॉन न हो, तो याद रखिए अगर इसके साथ हम ये वाला एनर्जी ऐड करें, क्योंकि ये सेकंड स्टेट में अनसर्टेनिटी है, या ये वाला एनर्जी को इससे सब्ट्रैक्ट करें, तो फिर भी हमारे पास कोई भी फोटॉन हो और उस फोटॉन की एनर्जी इस रेंज में हो, तो भी इलेक्ट्रॉन को इस स्टेट से इस स्टेट तक ले जा सकता है। मीन्स there is an uncertainty in the excited state, so it means its energy is not sharp defined. When energy is not sharp defined, so it will be clear when energy is not sharp defined, so it means this range of photon when incident to this electron, this will be excite this electron from this state to this state. Or in words we can state as, it means when electron need to jump from ground state to excited state require 10 power 14 hertz photon, then it means there is an uncertainty in frequency 0.60167 hertz in the excited state. If this add or subtract to 10 power 14 hertz photon, then still electron excited, means a band of frequency needed, and this band of frequency is also known as broadening of spectral line. Now application of Heisenberg energy and time uncertainty. तो याद रखिए बिफोर द मास ऑफ 5 मेसन, लेट कंसीडर हमारे पास कोई भी एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में हमारे पास ये दो न्यूक्लियन पड़े हैं, मिसाल के तौर पर ये भी एक प्रोटॉन है मिसाल के तौर पर और एक न्यूट्रॉन है। So in 1935 Yukawa presented his view about the nuclear force. According to Yukawa, this nucleon emit a particle and this nucleon absorb a particle, and then this nucleon emit a particle and this nucleon absorb a particle. It means there is a particle exchange occurred between these two nucleon, and this particle is known as pions or mesons. Up by using Heisenberg uncertainty principle, we can calculate the mass of this pion or pi mesons. So आइए इस पार्टिकल की मास को मालूम करते हैं बाय यूजिंग हाइजेनबर्ग एनर्जी एंड टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशंस. So mass of pi meson in 1935, Yukawa proposed that the nuclear force arises through the emission of a particle by one of the nucleons and its absorption by the other. This particle is now called pi mesons or pion. If the mass of pion is m, then its emission introduces an energy that is del E equal to mc square, a well-known Einstein mass energy relation. According to the uncertainty principle, this can take place only for a time del t equal to h cut over del E. इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है ये न्यूक्लियन जब भी यहाँ से एमिट होता है, तो जब ये न्यूक्लियन इसको एब्जॉर्ब करता है तो कितना टाइम लेता है? टाइम लेता है डेल टी. एंड अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी डेल टी इक्वल टू एच कट डिवाइड बाय डेल ई. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल ई एम सी स्क्वायर. सो डेल टी इक्वल टू एच कट डिवाइड बाय एम सी स्क्वायर. The range covered by the pion before being absorbed is therefore of the order R naught C into del T. Now the distance covered by this pion from this point to this point is what? So by a well-known classical equation, distance is equal to velocity multiplied by time. So this distance is known as, the distance between these two is known as range, that is R naught. V is replaced by C because
we consider that pion move with velocity applied and del T is the time take from this nucleon to this nucleon. So R naught equal to C into del T, putting the value of del T from this relation, so we obtain R naught equal to H cut divided by MC. Rm equal to mass of the pion equal to H cut divided by R naught C. If we multiply this and divide this by mass of the electron m naught both sides, so we obtain m, dividing both sides by m naught, so m over m naught equal to 1 over 2 pi R naught into H divided by m naught C, where m naught is the mass of the electron. So m over m naught equal to lambda naught divided by 2 pi R naught. This H over m naught C is known as lambda naught or Compton wavelength, and lambda naught equal to H over m naught C is the Compton wavelength of the electron. Its value is 0.0242 n to 10 power minus 10 मीटर. अगर यह हम प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करें, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को पुट करें, वेलोसिटी अप्लाइड को पुट करें, so we obtain lambda naught equal to 0.0242 angstrom. And we know that the value of R naught, the distance between two nucleon is almost 1.2 10 power minus 15. So by putting here R naught equal to this one, 2 pi as it is, and lambda naught equal to this one, and by simplify we obtain this m over m naught by putting all constant value. This whole term approach to 275. By cross multiplication m equal to 275 m naught, it means mass of the pion is almost equal to 275 mass of the electron. और याद रखिए बाद में जब पायोन को डिस्कवर किया गया तो उसकी मास जो थी वो ऑलमोस्ट बराबर थी 273 टाइम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. So it means that by using Heisenberg uncertainty relation, we can estimate mass of the pi meson or pions. Thank you.